नमो भगवते वासुदेवाय नवमध्याय शिशुवाच आत्ममायामृते राजन् परिश्यानु भवात्मनो नो घटेतार्थ संबंधो स्वप्न द्रष्टु विवाञ्जसा बहुरूपो इवा भाति माया बहुरूपया रममानो गुणे स्वेच्छा ममाहमीति मन्यते जर्हि वारो महिन्निशे परस्मिन् कालो माययो रमेतो गतसन्मोहः त्यक्तो दानस्तेतरो भयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं जराहो भावान्वितं ब्रह्मणि दर्शनरूप मज्जलिका व्रतादितो सो आदिदेवो जगतां परो गुरुः सुदिञ्चामास्थायो सुशिक्ष्य यैख्यतो तां नद्यागच्छद्दिशमत्र सन्मतां प्रपञ्चो निर्माण बीधिर्जरा भवेत् सोचिन्तयन् द्वैक्षरमेका दाम्बोष्योपासीनो द्विगर्जितं वचो विभो स्पर्शेषु जड्षोरस मेकविंश निष्किञ्चनानां नृपो बन्धनं जद्धनं विदु निशम्यो तद्भक्ति दीदिख्यादिषु विलिख्यो तत्रान्यपैशमान त्वरिञ्चामास्थायो विमृशो तद्धितं तपैषोपादिष्टो इवोदते मनः दिव्यं सशब्द मनोभदर्शनो द्विजा नीलात्मा बीजितो भयन्द्रिय अतप्यतोऽस्माखिललोक तापनं तपन्त्यपीयां स्तवतां समाहित तस्मै सोलोकं भावान् सवाजितः सन्दर्शयामासो परं नो जत्परं जपेत संक्लेश विमोह शब्दसं सोदृष्टबद्धि पुरुषैरभिष्टुतं प्रवर्तते जत्रो रजस्तमस्तयो सप्तञ्चो मिश्रं न सो कालविक्रमः नो जत्र माया किमुता परे हरेरनुव्रता जत्रो शूराशूरचिताः श्यामावटाटाः शतपत्रलोचनाः पीसङ्गवस्त्रा शूरुषु शूपे सस सर्वे चातुर्बाहवो उन्मीलिसन् मणिप्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः प्रवालवैदुर्यमृणालवर्चसः परिस्फुरत्कुण्डलमौलिकमालिनः भ्राजिष्णुर्भीर्य परितो विराजतो रसद्विमानबलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्योभिः सविद्युदम्राभिर्यथा नभः श्रीजत्रो रविन्युरुगाय पादयः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः प्रङ्गास्य राजा कुसुमाकरा अनुगैर्विगीयमाना प्रियकर्मो गायति ददर्श तत्राखिलसप्ततां पतिं श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनन्दनन्द प्रबलार्शनादिभिः स्वपार्षदग्रैः परिसेवितं विभुं भृत्य प्रसादाभिमुखं जगाशवं प्रसन्नहासारुण अलुलोचनं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीतांशुकं वैखसीलक्षितं श्रिया अज्जर्हणीया सनमासितं परं व्रीतं चतुःषोडश पञ्चशक्तिभिः युक्तं भगै स्वैरीतरत्रो चाध्रुवै सोऽवो धामन् रममाननीश्वरं तद्दर्शनल्लाद परिप्लुततान्तर हरिष्यातनु प्रेमभरणाशुलोचन ननामपादाम्बुजमैषो विश्वश्री द्वत्परमहंसस्येनो पार्थिगण्यते तं नियमानं सोपासितं कविं तदा प्रजाविसर्गेन्द्रियशासननिर्हन भवासु ईशरस्थितरा श्रीशागीरा प्रियः प्रियं प्रीतमना हरे श्रीसन् श्रीभवन्वासो त्वयाहं तोषितः सम्यग्वेदगर्भो शिक्षया चिरं भीतेनो तपसा दुष्टोषः कूटयोगिनां वरं वरयो भद्रं ते वरेषाम् अभिवन्दितं ब्रह्मन् श्रेय परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः मनीषितानुभावोऽयं ममो लोकोवलोकनं यदुपश्रुतो रहसि सकर्षो परमन्तपः प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते
तपो मे हृदयं सख्यात आत्माहं तपसो नग सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विषं विरजं मे दुत्तरं तपः ब्रह्मोवाचो भगवन् सर्वभूतानाम् अध्यक्षो अवस्थितो गुहा वेदोऽध्य प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेनो चिकीर्षताम् तथापि नाथमानैषु नाथो नाथाय नाथितं परापरे यथारूपे जानीयान्ति स्वरूपिणः यथात्ममाया योगेनो नानाशक्त्युपबृंहितं विलुम्पन् विसृजन् गृह्णन् बिभ्रदात्मानमात्मनः पीडयिष्यामोघसङ्कल्पो उन्नाभि यथोन्नति यथा तद्विषयां गेहि मनीषां मयि माधव भगवत्शिक्षितमहं करवाणि जतन्त्रित नियमानो प्रजासर्गं बद्धेयं यदनुग्रहात् यावद्यथा सख्युरीवेशो ते कृत प्रजाविसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मा मे समुन्नद्ध मधुमालिनः हि भवन्वासु ज्ञानं परमविद्यं मे यत् विज्ञान समन्वितं सरहि शङ्करं गत्सु गृहानुगदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपो गुणकर्मकः तथैव तद्विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नन्यज्जत् सरसत्परं पश्चादहं जरे तत्त्व यो वशिष्येतो सोऽस्म्यहम् रीत्यर्थं यत् प्रतीयते नो प्रतीयते चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु स्वावशेषनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न्यूनोतेषहं यदावदेव जिज्ञास्यं तत्त जिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकेभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा ये तन्मतं समातिष्ठ परमेनो समाधिना भवान् कल्पो विकल्पेषु नो विमुध्यति कर्हि चेत् सुकोवाच सम्प्रदिशैव जनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तैषो तद्रूप आत्मनो न्यरूनधरि अन्तर्हितेन्द्रियार्थायो हरये भीताञ्जलि सर्वभूतमयोऽपि संससर्जितं स्वपूर्ववत् प्रजापति धर्मपति एकदा नियमान् जवान् भद्रं प्रजानाम् अन्निसन्नातिष्ठत् स्वार्थकाम्यया तं नारदो प्रियतमो परिकथादानमनुव्रतः शुश्रूषमाना शीलेनो रसयेनो दमेन च मायां विजीविषन् विष्णोर्मायेशैषो महामुनिः महाभागवतो राजन् पीतरं भजतोषे तुष्टं निशम्य पीतरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिवृत्तस्य भवान् जन्मानुपृच्छति तस्माद् इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राहु प्रीतो पुत्रायो भूतकृत् नारदो प्राहु मुनयो सरस्वत्यास्तते नृपो ध्यायति ब्रह्मपरतो व्यासायामिति जरुताहं त्वया पृष्ठो वैराजात् पुरुषादितं यथा सिद्धोतमख्यास्ये प्रश्नान्यासु कृष्णसः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां द्वितीयस्कन्धे श्रीभागवत रविनामो नवमोऽध्यायो श्रीमद्राधा गोविंद कृष्ण प्रत्यानंद बल हरिबोल हरिबोल। Krishna Govinda Hare Murari He
ओं नमो भगवते वासुदेवाय। दशमध्याय। बादरायणुवाच अत्रो सर्गो विसर्गो स्थानं पोषणं ऊतय मन्नन्तर्यसानुकथा निरोधा मुक्तिराशय। दशमेशो विशुद्ध्यर्थं नवानमिहो लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानो श्रुतेनार्थेनो छन्दसा। भूतमातेन्द्रिया धिया जन्मसर्गो उदारित ब्रह्मणो गुणवैषम्या विसर्गो पुरुषं स्मृत। स्थिति विकुण्ठ विजयो पोषणं तदनुग्रह मन्नन्तराणि सद्धर्मो ऊतयो कर्मवासना। अवतारानुसरितं हरिसायस्या अनुवर्तिनं पुंसामीशकथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिता। निरोधो ऐशानुशयनना मनोसहो शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वन्यथा रूपं स्वरूपेणो व्यवस्थिति। आवासच्यो निरोधच्यो जतो अस्त्या अध्यवसीयति। सो आश्रयः परं ब्रह्मो परमात्मेति शब्दते। जो आध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसा वीरा विधिवै दैविकः। जस्तत्तत्रो भयविच्छेदो पुरुषो ध्याधि भौतिकः। एकमेवोतरा भावे जरा नोपलवामहे। तिर्यं तत्रो जो वेदो सो आत्मा स्वाश्रयास्य। पुरुषोऽण्डं विनिर्भयसो जरासु सो विनिर्गतः। आत्मनो वयन अस्सिन्नपो साक्षी शुचि शुचि। तास्वात् सित् स्वशिष्टासु सहस्रं परिवत्सरान्। तेनो नारायणो नामो जरापो पुरुषोद्भव। द्रव्यं कर्मसु कालंसु स्वभावो जीवजीवसु जदनुग्रहतो सन्ति नो सन्ति जदुपेक्षया। एको नानात्मन्निस्सन् योगतल्पात् समुत्थितः। गिरिजं हिरण्मयं देवो मायाव्यसीदत्तिधा। अधिदैवमथाध्यात्म्या अधिभूतमिति प्रभु विभु। अथैकं पुरुषं गिरिजं त्रिधा भिद्यतो तस्मिन्। अन्तशरीरो आकाशात् पुरुषेषु विशेषितो। अजो सहो बलं यज्ञे ततो प्राणो महानसु। अनुप्राणन्ति जं प्राणं प्राणन्तं सर्वजन्तुषु। अपानन्तं अपानन्ति नरदेवो विमानुगाः। प्राणेनोक्षिवटाक्षुत्रित् जन्तु राजायति विवाह। पिपासतो जैक्षतत्यो प्राङ्मुखं निर्भिद्यतः। मुखतस्तालु निर्विद्यं दिवा तत्रोपजायति। ततो नानारसो जज्ञे जिह्वा जो अधिगम्यते। विवक्षोर्मुखतो भुम्नो बन्धिर्व्याख्याय अधितं तया। जले सैतस्योषुचिरं निरोधः समजायत। नासिके निर्विद्यतां दोधूयति नपस्यति। तत्रो वायुर्गन्धबहो घ्राणो नशीजिगीक्षतः। जरात्मनि निरालोकमात्मानंसुदीक्षतः। निर्भिन्ने अखिनितेषु ज्योतिर्चक्षुर्गुणग्रहः। जोध्या मानेश्वरीशिभिरात्मा तत्तिरोजिघ्रतो। कर्णंसु निर्विद्यतां दिशः सोतं गुणग्रहः। वस्तुनो मृदुकठिन्या लघु गुर्वोद्रसी तथा। जिगृक्षत त्वं निभिन्ना तैषां रूमा महीरुहा। तत्रो सान्तर्बहिर्वासस्तथा लब्धगुणावृतः। हस्तौ रुरुहा तुरस्तैषो नानाकर्मो चिकीर्षया। तयोस्तु बलवानिन्द्रो आदानमुभयाश्रयम्। गतिं जिगीषतो पादौ रुरुहाति अति कामिका। पद्भ्यां यज्ञो स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते निनिमे। निर्विद्यतो शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः। उपस्थ आश्रिकामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्। उत्शिशिख्यो धातुमलं निर्विद्यतो वै गुडम्। ततो पायुस्ततो मित्रो उत्सर्ग उभयाश्रय।
आशीर्षिप्सो पूर्वो पुर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापानसतो मृत्यु पृथक् मुक्त भयाश्रयम् आदिशोरसन्न पानानां मासन् कुख्यस्तनादयः नद्या समुद्रासु तयोस्तुति पुष्टि तदाश्रये निदिध्यासोषमात्ममाया हृदयं निर्भिद्यत ततो शरच्चन्द्रो इति संकल्पो कामयेव स त्वक् चर्ममांसो रुधिरा मेदो मज्जामस्ति धातवः भूम्याप्तेजो मया सप्तो प्राणो व्योमम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणः मनो सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मज्जादिभिर्यावरणैरस्तभिर्बहिरावृतम् अतो परं सूक्ष्मतममव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमज्जानि जनं नित्यं वाङ्मनसो परम् अमुनि भगवद्रूपे मयाति धनुवान्निति उभे अपि नो गृह्णन्ति माया सृष्टि विपत्तिता सौभाग्या वाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधि नामरूपो क्रिया धत्ते सो कर्मा कर्मको पर प्रजापतिं मनुन् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गन्धर्वान् विद्यद्धा असुरगुज्जकान् किन्नराहु सरसो नागान् सर्पान् किंपुरुषान् नरान् मातृरेख्यो पिशाचांचो प्रेतो भूतो विनायका कुष्माण्डोस्मादो बेतालान् जातुधानान् ग्रहानपि मृगान् खगान् पशून् रक्ष्यान् वृक्षान् गिरीन् नृपो सरीसृपान् विविधा चतुर्विधा चेन्ये जलस्थल नवौकसः कुशला कुशला मिश्रा कर्मणां गतयस्ति वा सप्तम रजस्तमो इति तिस्रो शूरनि नायकाः तत्रत्ये कैवशो राजन् विद्यन्ते गतयस्तिरा जलैकैकतरो अन्यभ्यां स्वभावो उपहन्यते सोऽयैवेदं समद्धाता भावान् धर्मरूपधि उष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नर नरादिभिः ततः कालग्निरुद्रात्मा जत् शिष्टमिदमात्मनो संनियमिष्यति तत्काले घनानीकमिवानिल इत्थं भावेनो कथितो भावान् भगवत्तम नित्यं भावेनो हि परं द्रष्टुर्मर्हति शूरय नैष कर्माणि जन्मादौ परिस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रतिशेषार्थं माययारूपितं हि तत् अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्पौ उदाहृतः विधिसाधारणो जत्रोत्सर्गाः प्रकृतवैर्कृताः परिमाणं च कालेषु कल्पलेखनविग्रहं यथा पुरस्तात् व्याख्यस्ये पद्मं कल्पमथोऽसिनो श्रीशौनकोवाच जराहो नो भवान् सूतो क्षत्ता भावुतोत्तमो चचारो तीर्थानि भवति तिक्ता बन्धुषु सुदुष्टजान् क्षत्तु कौशाम्बवेस्तैषो संवादो अध्यात्मसंविष्टः संयतजद्वासो भगवान् तस्मै तिष्ठतत्त्वमुवाचः ब्रूहि नष्टमिदं सौम्यो बीजोरस्तैषो विशेषितं वधुना त्यागनिमित्तं चोतहैर्वागतान् पुनः शिशुतोवासो राजा परिहितो पृष्ठो जरवासोन्महामुनि तद्भोविदाय शृणुतो राज्ञो प्रसानुसारतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे दशलक्षणं नामो दशमोऽध्यायो श्रीमद्राधा गोविन्द कृष्ण प्रत्यानंद बल हरि बोल।
नमो भगवते वासुदेवाय मसक्ता द्वितीय स्कंधल्वरे द्वितीय स्कंधदा कई सारे श्री गोविंद की वो थंबा श्री चोरो अनि पुण्य साखे आहानवा स्कंदना येलवरे अनि शुभ स्कंदना वो योरे भक्त वैष्णवा विष्णु चोरोन अनि से मस्दबु पटम पुनमक्ता आश्रय तौदुना चोरोन अनिबु थमोइल्ललो निजे मसी वरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद श्रीमद् राघव कृष्ण प्रत्यानंद बोले हरि बोल हरि बोल। प्रथम अध्याय शिशुवाच एवमेतत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भावान् किलो क्षत्रापदं प्रविष्टेनो त्यक्त्वा सोगीह मृद्धिमत् यदा अन्नं मन्त्रगीतो भावान् अखिलेश्वरो पौर्वेन्द्रागृहं हीत्वा प्रावेशात्मा सात्कृतं शिराजोवासो कुत्रो क्षत्रुर्भवता मैत्रेयमासो संगमा कदावासाहु संवादो एतद्वर्णयो नोः प्रभ नो जल्पार्थो जयस्तैषो विदुरैश्यामलात्मनो तस्मिन् वरीयसि प्रश्नो साधुवादोपबृंहित शिशुरोवाच सो एवं ऋषिर्वर्यो अभ्यं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्यावतं शूरध्वसित् पीतात्मा श्रूयतामिति शिशुवाच यदा तु राजा सुश्रुतानाम् अदुन् पुंसन्न धर्मेणो विनष्टदृष्टि भ्रातुर्यतिष्ठेषु सूतान् विबद्धुन् प्रवेश्य लैख्या भवने जराहो जरा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्जं सूतकर्म गर्ध्यं नोपारयामासो नृपो स्नु साया स्वस्यै हरन्त्या कुजकुङ्कुमानि द्यूते स्वधर्मेनो जीते शोषारः सत्यावलम्बैषु वनाकटैश्च नो जाचतो अदात् समयेन दायं तमोजुषानो जज्जात शत्रः जरासो पार्थ प्रहितः सभायां जद्गुरु जानि जगादो कृष्णः नोटानि पुंसामृतायनि राजोरुमिनी क्षतपुञ्जलेशः जरोभूतो भवन प्रविष्टो मंत्रायो पृष्ठ किलो पूर्वजेन अठाहो तन्मुंतदिशां वयान् जन्मन्त्रिणो वैजूरिकं वदन्ति अजातशत्रो प्रतिजस्य दायं तितिक्षतो दुर्विसहं तवाः सानुजो जत्रो वृकोदराहि सुसंयुषा जत्तमलं विवेशि पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् साक्षित देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां दरुदेवदेवो विनिर्जिता शेषनिदेवदेवः सो येषु दोषो पुरुष वीरास्ते गृहान् प्रविष्टो जमपत्यामत्या पुष्णाति कृष्णाद्विमुखो गतो श्रीस्तजस्व सव्यं कूलकौशलाय इत्युचिवा शत्रु सुयोधनेन प्रविद्य पक्षु रीताधरेण असत्क्रीतः सदस्प्रियहनीशीलः त्यक्त्वा सो कर्णानुसौबलेन को येन मत्रोपजुहावो जिह्वं दस्यः सुतं दद्बलैनिवो पुष्ट तस्मिन् प्रतीपो परकृत्यो आस्ते निर्वैश्यामासु पुरा श्वसान सो इत्थं मत्युल्लनकर्णबाणै भ्रातु पुरो मर्मसु तारितोऽपि स्वयं धनुर्धरी निरायो मायां गतव्यथो जरारु मानयान् सो निर्गत कौरवपुण्यलब्धौ
गजाह्वयात्तिर्षपदोपरान् अन्नचक्रवत् पुण्यश्रीकीर्षयोर्व्यामधिष्ठितो जाने सहस्रमूर्ति परेषु पुण्यो पवनद्रिकुञ्जेष्व पङ्कटोशयेषु सरित्सरसु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचारो तीर्थाय तनोऽस्वनन्य गां पर्यटन्मेध्याभिवित्तवृत्ति सदा प्लूतो च शयनो अवधूत अलक्षितो स्वैरभरूतवेषो व्रतानि शिरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षन् कालेन यावत् गतवान् प्रभासन् तावत् ससालोक्षीति मेरुचक्राम्येका पत्रामपि तेनोपार्थ तत्राठु शुश्रावो सुहृद्वीनिष्ठिं वनं यथा वेणु जबन्धी सम्प्रशयन् संस्पर्शयादग्ध मठानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्याधिगायो तुष्णीं तैषां त्रितप्स्यो मनसो मनोत्यो पृथोरगारग्ने शीतैश्ववायः तीर्थं सुरामैषो गवाङ्गुहैष्य जस्सद्ददेयैषो सो आशिषेवे अन्यानि चेहो द्विजदेवदेवैः क्रीतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि तद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति तदस्तति ब्रजो स्वरस्तमिद्धं सौवीरमत्स्यानुकूरु जङ्गलाञ्च कालेन यावत् जमुनापुपेत्यो तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श सोवासुदेवानुचरां प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्गगार्धं प्रणयेन भद्रं स्वानां प्रीषद्भगवत्प्रदानां कचित् पुराणो पुरुषौ स्वनाभ्या पद्मानुवृतेहो कीलावतीर्णौ आशातो उर्व्याकुशलं विरहायो कृतक्षणो कुशलं शूरगेः कचित् कुरुणां परमो सूर्यन्नो भामोषो आस्ते सुखमङ्गशौरीः जो वै शोषिषां पितृवद्वराति वरान् वदन्ये वरतर्पणेन कचित् वरुठाधिपति यदूनां प्रद्युम्नो आस्ते सुखमङ्गवीर जङ्रूपिणीं भवदत्तलिङ्गे आराध्यो विप्रान् स्मरमाधि सर्गे कचित् सुखं सततवृष्णिभोजनादशरः कानामधिपत सो आस्ते जमध्यादिचञ्च सततत्र नेत्र नृपासनासां परिहृत्यो दूरा कचिद्धरे सौम्याशूतो सदृक् आस्ते अग्रणीरथा रथीनां साधुशल् असुरजम्बवती व्रतध्या देवं गुह्यं जो अम्बिकया गृहीतो अग्रे क्षेमं शोकचित् युधानास्ति जो फाल्गुन लब्धधनुर्हैष्य लेवे अंजसा रोक्षजौ सेवयैवो गतिं तदीयं जदिभिः दूरात्मपां कचिद्बूढो षष्ट्यानमीय आस्ते सो फल्का पुत्रो भगवत प्रसन्न जो कृष्णपादाङ्कितमार्गा पांशुष चेष्टतो प्रेम विभिन्न धैर्याः कचित् शिवं देवको भोजपुत्रा विष्णुप्रजायायैवो दिवमातुः जा वै सो गर्भेनोदरार देवं त्रयीजठा यज्ञभीतानमर्थम् अपि सीतास्ति भगवान् सुखं भोजो सततां कामदुभो अनिरुद्ध जामनन्ति स्म हि शब्दयोनिं मनोमयं सप्ततुरीयतत्तम् अपि सिद्ध अन्येजो निजमात्मा दैवमन्यः भृत्या समनुव्रताते हृदीकसत्या आत्मजोचारुदेशन गदाधरो स्वस्ति चरन्ति सौम्या अपि सदुर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेणो धर्माः परिपाति हेतुं दुर्योधनो अतप्यतो जसवायां सम्यग्जलैष्णा विजयानुवृत्या किं वा क्रीताघी घमात्यमर्थि
भीमो अभिहरदीर्घतमं च मुञ्च जयसङ्घ्रिपाटं रणभूमो सेहि मार्गं गराया चरतो विचित्रं कचिज्जशोधा रथजूटपाना गाण्डीव धन्यो परटातिरस्ति अलक्षितो जसरकूटगुरुः माया कीराटो गिरी षष्टोष जमाबुर्षितनयो पृथायां पार्थे ब्रीटौ पक्षभीरक्षिणीवो रेमाटो उड्डाय मृधे स्वरिकठं परार्षुपर्णाभिवो वज्री वक्त्र अहो पृथापि ध्रियते अर्वकारसे राजर्षिवर्येनो बीनपीतेन जस्तेकवीरो अभिरथो विजिग्नो धनुर्द्वितीया ककुभा चतस्रः सौम्यानुशोचेतमथ पतन्तं भ्राते परेतायु विदुरुहेजो निर्जापीतो जीर्णशूरिक् स्वपर्जा अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सोऽहं हरेर्मर्त्या विलम्बनेन दृशो नृणां चालङ्घये विधातुः नान्योपलक्ष्या पदवीं प्रसादात् तेषामपि सङ्गतिविस्मयो अत्र नूनं नृपानं त्रिमरुत्पठानां महिं मूलयां समूभिः वधात् प्रपन्नार्ति जिहीर्षयो प्यूपै शताब्दं भावानुकुरूणाम् अजैषो जन्मोत्पठनाशनायो कर्मण्यकर्तुग्रहणायो पुंसां नन्न कथाको अरति देहयोगं परो गुणानामूतो कर्मतन्त्रं तैषो प्रपन्नाखिललोकपाला लोकपानाम् अवस्थितानाम् अनुशनेषे अर्थायो जातैषो जरुसुजैषो वार्तां सख्ये कीर्तयो तीर्थकीर्ति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे प्रथमाध्यायो श्रीमद् राधा गोविंद कृष्ण प्रत्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय अध्याय। शिशुवाच इति भागवतो स्पृष्टो क्षत्रावर्तां प्रियास्यां प्रतिवक्तुं नो तिष्ठेः औकन्ध्या स्मारति यश जो पंचाहायना मात्रा प्रातराय जाति तन्नै सद्रचयन् जैष्या स्वपर्जान् बाललीलया स्वगतं सेवयातैष्य कालेनो जलसंगत श्रेष्ठवार्तां ब्रूयाद्भर्तु पादाबनुस्मरन् सो मुहूर्तमभट्टुष्णीं कृष्णाङ्घ्रि सुखयावृशं तीव्रेणो भक्तियोगेनो निमग्नः साधु निर्वृतः पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्गो मुञ्चन्मीलदशाशुचि पूर्णार्थोल्लखितस्तेनो स्नेहप्रसरसंप्लुतः शनकै भवान् लोक नीलोकं पुनरागतौ विमृशो नेत्रे विदुरं प्रीत्याद्धवो उस्मयन् श्री उद्धवो वासो कृष्णाद्युमनि निम्नोषो वीर्यशुषो गरीनः किं नु न कुशलं ब्रूयां गतस्येषु गृहेश्वरं दुर्भगो बटवो लोकोऽयं जरवो नितराम जे संवसन्तो नो विदुर्हरिं मीना इवोरूपम् इंगितज्ञापूरु प्रौढ़ा यकारामासो सततामृषभं सर्वे भूता वासोन्य मां सतो देवेशो माया सृष्टा जे सन्या सरसाश्रिता भ्रम्यते धीर्न तद्वाक्यैरात्मानुतात्मनो हरो प्रदर्श्या तप्त तपस्यां वितृप्तदिशां नृणाम् आदायान्तराधात् जस्तु सोबिम्बं लोकलोचनं धर्मव्यली लौकिकं सोयोग मायाबलं दर्शयताद्गीतं विस्मापनं शैशोचो सौभगर्धे परं पदं भूषणभूषणाङ्गं
दद्धर्मासूनोर्बितो रासूये निरीक्षो दिदृक्स्वस्यायनं त्रिलोकः कार्ष्णेनो च देहो गतं विराटो कुर्वाणसितो कुशलमित्य मन्यतः जैषानुरागप्लुता इतिहासरासलीला विलोकप्रतिलब्धमाना ब्रजस्त्रियो दृग्भीरनुप्रवित्य धियो अवतस्थूकीलोकृतशेषा स्वसन्तरूपे पश्चितरै स्वरूपैरभ्यमर्जमाने स्वकल्पितात्मा परापरेशो महदं संयुक्त जजोऽपि जातो भवान् यथाग्निः मारीतयोऽतदयशो जरबिम्बर्णं तद्वासुदेवो गिहे ब्रजे स्ववासो अभिराजीवो प्रियं स्वयं पूरद्विराडसिद् जनस्तु गिरिजा दूनोति चेतो स्मरतो ममेतज्जराहोपादाभिव्यञ्जापितो तथाम्बो कंसा ऊरु संहितानां प्रसीदतां नो कृतनिष्कृतीनां को वा मुष्यङ्घ्रि सरोजरेणु विस्मर्तु मिशीता पुमान् विजिघ्रन् जो विस्फुरत् भूवितपेनो भूमिर्भारं कृतन्तेनो तिरस्कारो दृष्ट्वा भवद्भिर्नशु रार्षूये त्यज्यैषु कृष्णं दिशतोऽपि सिद्धि जाङ्योगिनो संस्पृहयन्ति सम्यक् योगिनो कष्टदिशरं सेतु तथैव चान्ये नरलोकवीरासो आहवे कृष्णमुखारविन्द न्यत्ते पीबन्तो नयनाभिरामं पार्थस्त्रापूता परमापुरस्य स्वयं तु सैम्याति संयन्त्राधीषु स्वरज्जालक्षणाप्तमष्टकामः बलिंहरद्भिश्चिरलोकपालै किरीट को पीरत्वपादपीठ तत्तैषो कंकरिजमलं भूटानो विप्लापयत्यङ्ग्यो जलुग्रसेनं तिष्ठन्निसन्नं परमेष्टिधिञ्चै न्यबोध धयद्देवो निरारेति अहोपकीजं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययत् अपि शब्दि लेभे गतिं धाञ्चाधियां ततोऽन्यं कंवा दयालुं शरणं व्रजेम मन्येश्वरान् भागवतांस्त्याधीशे संरम्भ मार्गाभिनिविष्टचित्तान् जे संयुगे असख्यतो तर्षपुत्रवंशे सूनाभा यूढमापतन्तं वसुदेवैषो देवक्यां जातो भुजेन्द्र बंधने श्रीकेशुर्भावानैषा समजेनाभिजाचितः ततो नन्दव्रजमितो पित्रा कंसाब्धिरिभ्यता यकारसो समास्तत्रु गुरार्ची शवलोकसत् परितो वत्सपैरवत्साचारयन् व्यारद्विभु जमुनोपवने कूजात् बीजसङ्कुलिताङ्घ्रिपे कौमारं दर्श्यं चेष्टां प्रोक्षणीयं ब्रजोगसां रुदन्नीवो हसन्मुग्धा बालहिंसावलोकन सोऽएव गोदनं लैख्यानिकेतं शीतगोवृषं चारयन् अनुगान् गोपान् रणवेणुवरीयवत् प्रयुक्तान् भोजराजेनो मायिनः कामरूपिणः लीलया विनुदातांस्तान् बालोक्रियन्नकामिनो विपन्नान् व्यसनानेनो निगृह्यो भुजगाधिपम् उत्थत्यापायत् गावश्चस्तोऽयं प्रकृतिस्थितम् आजापयोद्गोवेनो गोपराजं जुजत्तमैः वित्तैषा चारुभैश्चैषो चिकीर्षो सद्वयं विभु कर्षचिन्द्रे व्रजोकापोपात् भग्नमानेऽपि अतिविफलः गोटलीला तव त्रेनो त्राता भद्रानुगृह्णता सरस्वतीकरैर्मिष्टं मानयन् रजनीमुखं गायन् कल्पदं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डल इति श्रीमद्भागवते महामुनि महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरद् उद्धवसंवादे द्वितीयोऽध्यायो श्रीमद्राधागोविन्दकृष्णप्रचानन्दे बोल हरि बोल हरि बोल।
श्रीमते वासुदेवाय। तृतीयाध्याय। श्री उद्धववाच ततोऽसो आगत्य पुरो सपित्रो चिकीर्षया बलदेव संयुत निपत्य तुंगाद्रीप यूथनाथं हतं व्यकर्षणस्युमोजसा अर्व्यां सन्दीपने सकृत् प्रोक्तां ब्रह्मदित्यो सविस्तरं तस्मै प्रातद्वयं पुत्रं नीतं पञ्चजनोदर समाहूता भीष्मकन्यया जे श्रिय सवर्णेनो भूयै सता गन्धर्वभृत्यानि सतां स्वागं दर्हे पदं बुद्धि दरत् सुपर्णः कुकुद्बीनो बीधनासौ दमित्वा स्वयंवरे नाग्रजीति मुभाव तद्भग्नमानानपि गृध्यतो अज्ञान जग्ने ऐक्यतो शतपीठो शोषस्ते प्रियं प्राभुर्व्याम्यो इवो प्रियाय विधित शूरार्धच्युरुदर्शि वज्राद्यव्यङ्तं सगलो रुदण्डो मृरमिगो नूनमयं वधूना सूतं निधे खं वपुषाग्रसन्तं तत्रो सूनाभून्मथितं धरित्रा आमन्त्रितस्ततो नरायो शेषं दत्त्वा तरन्त पूर्वमाविशेष तत्राधितास्ता नरदेवकन्याः पूजेनो दृष्ट्वा हरिमर्थबन्धुन् उत्थाय सद्ये जगृहुः अप्रहर्षवीरानु रागो प्रहिता अवलोकै आसां मुहूर्तयेकस्मिन् नानागारेषु जोषिता सविधं जगृहे पाणि ननु रूपो सुमायया तस्पैत्यन्यजनया आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकन्या कस्यां दशो प्रकृतिर्विभूभूर्य यथा कालमागलसल्वादीन एकैरुद्धतो पुरम् अधिघन स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेजो आदिशन् संवरं दिविदं बाणो मूरं बल्कमेव च अन्यांशो दन्तवक्रादीनामधित् कांसाघातयत् अथोति भ्रातृपुत्राणां पथयो पतितानिनां ससालभू कुरुक्षेत्रं जेषामापततां बले शोकर्णदुःशासनौ सौबलानां कुमन्त्रपाकेनो हतस्यायुधं सुयोधनं सानुचरं शानं भग्नो ऊरु मुर्व्यानो ननन्दपश्यन् कियान् भुवो वयं क्षपितोरुभावो जरद्रोण भीष्मार्जुनमधीयमूलै अष्टादशाख्यौहीनिकामण्डं सौरस्ते बलं दुर्विषं जजुना मीठोजरेषां भविता विवादो मध्वामदाताम्रविलोचनानां नैषां वरोपायो ईयानतो अन्य मज्जुज्य अन्तर्जले स्वयं स्म एवं सञ्चितो भवान् स्वराज्योस्थैप्यो धर्मजं नन्दयामासु सूरिजो साधूनां वर्त्मोदर्शन् उत्तरायां धृतो पूर्ववंशो शब्दभिर्मन्युना सो वै दौनस्त्रा सम्प्रीत्या पुनर्भावता निधृतो अजाजयद्धा धर्मसु धर्मेदे मिस्तिवि विभु सोऽपि क्षमानुजैरसन् रेश्मे कृष्णे मनुव्रता भावानपि भीष्मात्मा लोकवेदो यथानुगा कामान् शिवेवो दुर्भाग्या असक्तो संख्यामाश्रितो स्निग्धस्मितावलोकेनो वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणा वृद्धेनो श्रीनिकेतेनो सात्मना इमं लोका ममञ्चैवो रमयन् सुतराङ्गजं रेमे क्षणदार दत्त क्षणस्त्री क्षणसौरिदा तस्यैवं रमानेषु संवत्सरगणान् बहून् गृहमेदेषु योगेषु विराग समुदायत दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीन स्वयं कुमार विश्वम्भेदो योगेनो योगेश्वर मनुप्रदा पुर्जां करासे क्रीडभिजलुभोज कुमारकै कोपिता मुनयोपेषु शेपु भवानात्मकोपिता ततो कतिपयैर्मासै विष्णुभोजन्धकादरो जजो सवासं संदृष्ट्वा रथैवामृतं तत्र स्नात्वापि त्रिन्देवान् निशिचैवोत्तरं वसा तर्पयित्वापि प्रेभ्यो
गावो बहुगुणादरु हिरण्यरजतं शिष्या सज्जावासन स्यादीन कल्मषां कल्मलां हयानिभादधान् कन्यां धरां प्रीति करीमपि अन्यक्षोरुरुसन्तेभ्यः दत्त्वा भगवत अर्पणं गोविप्रा सा सबो सुरा प्राणिमुर्भुवि मूर्धिवि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धव संवादे तृतीय अध्याय श्रीमद् राधा गोविंद कृष्ण प्रत्यानंद हरि बोल हरि।